For the DU LLB exam, we keep discussing the strategy, how to prepare, from where to prepare, but do we exactly know the syllabus? In this particular video, I am going to discuss everything about that syllabus. Hi guys, I'm Ayushi and welcome to Law Digest. Now I see many students preparing CRPC, evidence, maths, whereas these things are not to be done. Now why no maths? I'll be discussing the same very soon. इस वीडियो में मैं ये बातें डिस्कस करूंगी कि हमें इस सिलेबस में क्या क्या चीजें करने की जरूरत है. For that you need to stay tuned till the end. I will be discussing some very important points that are relevant for the purposes of this exam. So keep watching this video till the end. And if this channel is helping you in any way, then and also now let us look at the syllabus that has been given in the DU LLB latest prospectus that is available on their website of 2020 to 2021. Now, in this particular prospectus, they have clearly stated the following sections to be a part of the syllabus: legal awareness and legal aptitude, GK, English, analytical abilities. Now, if you'll see here, maths is not present. Maths is not present at all, and if you will check the 2020 paper, there weren't any question from maths. But still what we do is that for the safe side, and also students keep preparing for other exams as well, जो DU के लिए prepare कर रहे हैं वो साथ साथ और exams भी देते रहते हैं for backup, so they keep preparing maths. Now for this particular exam, as I always say, अगर हम past year pattern के हिसाब से देखें तो maths पहले आता था and धीरे धीरे in the recent past maths का जो weightage है वो काफी कम हो गया है. अब अगर हम इस सिलेबस को देखें तो हमें क्या करने की जरूरत है? What we need to do as per this syllabus that is prescribed in the prospectus that is available on the website of law faculty. Just in case you have not looked at the prospectus of 2020 or you haven't visited the website at all, I'll be giving the link of the same. I'll give the official link of the website in the description below. You can go and check there. Now, in GK also you'll see current affairs is not mentioned. However, current affairs is to be done for this exam. Current affairs for the past 1 year needs to be done. Now, speaking of the weightage, for legal aptitude, if you will check the 2020 paper as well as the 2019 paper, the weightage of the legal section has increased considerably as compared to previous years. पहले सालों के comparison में legal aptitude का जो weightage है वो 2020 और 2019 में काफी बढ़ गया है. Now this section comprises of your 55 to 65 questions. इतने क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, so you can see that more than 50% of the paper or about 50% of the paper is from legal aptitude. Then coming on to GK. From GK, 15 to 20 questions are asked. Now these questions are from static as well as current GK, current affairs. Now on the basis of the previous year pattern, we have seen there are more questions of current affairs rather than static GK. For static GK, you have around 5-6 questions and the remaining are from current affairs. So it is important कि हम दोनों ही sections को करें. Speaking of static GK, you can probably, if you don't have time in hand, you can skip this section because it's a very lengthy section. Because यहाँ पर आपको history, geography, eco सब कुछ करना पड़ता है and इतना time नहीं होता. So you can skip that for if you feel that your preparation will take a lot of time, you don't have enough time in hand, and you started your preparation very close to the exam, then in that case you can skip static GK. Then coming on to English. English में 10 to 15 questions आ सकते हैं. We will come on to the individual topics कि किस topic से questions आ सकते हैं. Then 10 to 15 questions from logical reasoning. Logical reasoning I have stated here, as per the prospectus, they have mentioned the term analytical abilities. So it is the same as logical reasoning. They will check your ability to analyze things. If you will check the 2020 paper, there were around 5 questions from this area. Now, maths 1 or 2 I have given here just
in case, just for the safe side, even though it's not there in the 2020 prospectus, the prospectus for 2021 is not out as yet. So those who are preparing for this exam, for them I would say that for the safe side, you keep doing maths till you actually see the 2021 prospectus that gets released. Till that time you can do maths, just do very basic elementary level of mathematics. We'll discuss the topics that you need to do now. Speaking of legal aptitude, what are the subjects that need to be done in this particular area, that are required to be done in legal aptitude? You need to do constitution, जिसको कुछ लोग polity भी बोलते हैं, then tort law, contract law, IPC law, IPR law, family law, United Nations and other international organizations. So these parts you need to do. Now legal subjects की जब हम बात कर रहे हैं, law subjects की बात कर रहे हैं, तो यही जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं सिर्फ यही करने हैं आपको. डू नॉट गेट इनटू CRPC, CPC और एविडेंस लॉ. these things, these are not required to be done. Only basic level of your legal knowledge is checked here. आप पिछले सालों के पेपर भी देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, अगर वहां पर भी इन एरिया से क्वेश्चंस नहीं है. कभी कभी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन आया है बेल पे. नाउ दिस इज वेरी बेसिक. द टर्म बेल जो आपसे पूछा है वो बहुत बेसिक होता है, एंड दैट फॉल्स अंडर योर लीगल मैक्सिम्स एंड लीगल टर्म्स. It does not mean that you need to have proper knowledge of the CRPC law. Maxims and terms you need to cover. Legal current and legal static you need to cover. Legal current will include all your landmark judgments that keep coming up, the bills, acts that are passed, or in case there is any important appointment, retirement in the field of judiciary, law firms, that can be asked. Then there can be questions from committees and commissions, and also legal reasoning. Legal reasoning are your principle and fact-based questions wherein a principle is stated, a legal principle is stated, certain facts are given, and you need to reach to a reasonable conclusion. Now this conclusion you have to come to on the basis of principle only, and not on the basis of your knowledge that you have attained from here. This is to be kept separate when we speak of legal reasoning. So do keep this in mind. I have certain videos on YouTube, and also we have our modules where I have discussed these golden rules of legal reasoning. You can get through those. I'll be attaching a link of my videos on legal reasoning here, and also of any other parts that I feel are important, or the videos that I feel you should watch. I'll be attaching certain cards in the top right corner of this video for you to check. Now कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या टॉपिक्स करने की जरूरत है. वी नीड टू कवर प्रीएम्बल, यूनियन एंड टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फेडरलिज्म, देन डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो आर्टिकल 12 में गिवन है, आर्टिकल 13 जो लॉ की बात करता है, देन वी नीड टू डू ऑल द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32, DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज, देन coming on to executive, legislative and judicial powers of who all. We discuss the president here, we discuss the governor. When we speak of state, we discuss the governor. Then we discuss the power to make bills, ordinances of the president and the governor, also their judicial powers to grant pardons. Then we discuss the parliament, state legislature करना है, legislative procedure, bills कैसे pass होते हैं, what is money bill, all these things need to be done. Then finance and territorial jurisdiction of states and center needs to be done, जहाँ पर हम GST वगैरह के बारे में बात करते हैं. Then judiciary appointment कैसे होता है, retirement कैसे होता है judges का, collegium system क्या है, then what are the inherent powers of the court. All these things we discuss here. Also there's a small concept of judicial review that you need to know. Then freedom of trade and commerce, किस तरह से states के बीच में freedom होता है to trade and conduct business, वो हमको discuss करना है. Then emergency we need to do all the three kinds of emergency: national, state, financial emergency. Amendments
I have a video on all the important amendments that are there. You can check that video as well. And also schedules to constitution. Recently I posted a reel on Instagram wherein I had discussed the short trick of remembering the schedules to constitution. This is a very old trick of tears of old PM. You can go to our Instagram handle and check that video as well. देन मूविंग ऑन टू लॉ ऑफ क्राइम्स. आईपीसी की अगर हम बात करें तो डेफिनेशंस करेंगे हम बेसिक्स की, ऑफेंस क्या होता है, पनिशमेंट क्या होती है, क्या पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, देन रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, जनरल एक्सेप्शंस हम देखेंगे कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जिनको मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं डाला जाता है अंडर द जनरल डिफेंसेस. देन प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, वील स्टडी दैट. अबेटमेंट करना है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना है, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी दैट इन्वॉल्व योर ऑफेंसेस लाइक सेडिशन एटसेट्रा, ये आपको करने हैं. ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी करने हैं, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, कल्पेबल होमिसाइड. देन ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपके थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिस अप्रोप्रिएशन, ये सारी चीजें आती हैं. आई हैव अ प्लेलिस्ट कॉल्ड क्रिमिनल ऑफेंसेस वेयर आई हैव डिस्कस्ड all the offenses against property properly in detail through illustrations. You can check that playlist as well. Then marriage based offenses जो होते हैं, bigamy, cruelty, dowry death, then criminal intimidation, defamation attempt, ये सारे टॉपिक्स आपको लॉ ऑफ क्राइम्स में कवर करने हैं. आईपीसी में सीआरपीसी नहीं करना है. देन कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एक्सेप्शंस क्या है कंसिडरेशन के, हु आर द पीपल हु आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कि मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए इंसान. देन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी थ्रू फ्री कंसेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको पता करना है. देन कुछ अग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉइड डिक्लेयर करता है. दीज अग्रीमेंट्स नीड टू बी डन. What are these agreements? You need to know them. Then how does the discharge of contract takes place through novation, alteration, all these things you need to do. Frustration of contract कैसे होता है, section 56 you need to do. Then breach of contract, how does the breach arise, there is actual and anticipatory breach, दोनों में क्या फर्क है, you need to know these basics. And what are the remedies in case of breach, जो 73-74 में है, Hadley versus Baxendale, ये इसमें जो rules laid down किए गए हैं, you need to have a good knowledge of these. And also quasi contracts, जहाँ पर हम supply of necessaries और माइनर्स की बात करते हैं, ये टॉपिक्स आपको करने हैं. देन कमिंग ऑन टू टॉर्ट लॉ. टॉर्ट लॉ में इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया, ये जो बेसिक मैक्सिम्स हैं ये करने हैं. स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होती है, वाइकेरियस लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी में मास्टर सर्वेंट, स्टेट, सब करना है. देन नेग्लिजेंस, किस तरह से नेग्लिजेंस अराइज होता है, पॉपुलर केस है डोनो वर्सेस स्टीवनसन का, वो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं. नाउ I'll create a separate video if you want to. I already have a lot of videos on YouTube wherein I keep discussing कि आप ये जो topics हैं ये कहाँ से कैसे cover कर सकते हैं. Apart from this, what I've done is, if you'll check the link, the description of this video, I've given a link wherein I have placed a PDF जहाँ पर मैंने पूरा syllabus जो है वो detail में discuss किया है. I've discussed the syllabus in detail and I have also provided that what subject you can cover from where. कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कवर कर सकते हो वो उस पीडीएफ में गिवन है. यू जस्ट नीड टू गेट होल्ड ऑफ दैट पीडीएफ, डाउनलोड दैट पीडीएफ एंड यू नो प्रॉब्ली टेक आउट अ प्रिंट आउट एंड कीप इट विद योरसेल्फ. तो उससे क्या होगा, आपको पूरा सिलेबस और पूरी एक क्लैरिटी होगी कि आपको कैसे कहाँ से क्या पढ़ना है. सो योर time will not get wasted in doing all that research and finding out things and asking all over WhatsApp, Telegram. That you can save on that time and check that PDF. Then coming on to tort, the topics that you need to do, further defenses to tort, then nervous shock, defamation IPC और tort दोनों के point of view से करना है. न्यूसेंस क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मलिशियस प्रोसिक्यूशन, इमर्जिंग टॉर्ट्स, एक्सटिंक्शन ऑफ लाइबिलिटी, ये बहुत
बेसिक फॉर्म में करना है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स अबाउट दीज थिंग्स. Then coming on to IPR law. Speaking of IPR law, copyright, patents, trademarks, geographical indication and design, and trade secrets. These are to be done. Now, how do you need to do these? It's already given in the PDF. You need not buy or you need not go into the depth of bare acts for these, because दे आर गिवन इन टू मच ऑफ डिटेल. एंड प्रोसीजरल लॉ जो है वो भी वहां पर गिवन है, उसमें आपको उतना घुसने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक्स आपको जानने की जरूरत है. आई ऑल्सो अपलोडेड रिसेंटली रिविजन सीरीज. देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑफ रिविजन सीरीज ऑन IPR लॉ. यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो. देन फैमिली लॉ में आपको हिंदू मैरिज एक्ट करना है. असेंशियल्स ऑफ मैरिज क्या होते हैं, असेंशियल्स ऑफ डिवोर्स क्या होता है, सबपिंडा रिलेशनशिप एंड प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, ये आपको कवर करने हैं. देन अडॉप्शन कैसे होता है, मेंटेनेंस के क्या ग्राउंड्स हैं, हिंदू माइनॉरिटी कौन अडॉप्ट कर सकता है, नेचुरल गार्जियन कौन होता है, हिंदू सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होता है, इंटरस्टेट टेस्टिमेंट्री, ये सारी चीजें आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए. देन जॉइंट हिंदू फैमिली एंड प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होती है जॉइंट हिंदू फैमिली में. देन स्पेशल मैरिज एक्ट यू नीड टू कवर, एंड ऑल्सो मुस्लिम लॉ यू नीड टू कवर. जो आप हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ेंगे, मैरिज डिवोर्स डिसोल्यूशन के बारे में, वही चीजें आप मुस्लिम लॉ में भी पढ़ेंगे. Also, there will be certain additions in the form of theories, schools, that also you need to cover. Then, what are the other areas of legal aptitude? Legal maxims, committees, legal reasoning, United Nations and international organization. यहाँ से हर साल questions आते हैं. This is an important topic. You need to cover this topic properly. Then legal current and legal static GK. ये टॉपिक के लिए भी आप हमारे चैनल पे जो वीडियोस हैं, यू कैन रेफर टू दैट. वी कीप कवरिंग ऑल द लीगल करंट अफेयर्स ऑन अ मंथली बेसिस. You can get hold of those videos, as well as we have our modules that are available on our website www.lawdigest.in, wherein all these topics that are not properly covered in your self-guide books have been covered properly in detail, and for the purposes from the point of view of this exam, keeping in mind the exam pattern. Then GK में दो पार्ट्स हैं, स्टैटिक एंड करंट. स्टैटिक में क्या क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेशनल. नाउ करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, स्पोर्ट्स, रैंकिंग इंडिसेस, इंटरनेशनल न्यूज, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सब कैटेगरीज करनी है. स्टूडेंट्स की आस्किंग की करंट अफेयर्स में क्या कवर करना है. फॉर द पर्पसेस ऑफ द DU LLB एग्जाम आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं. यू डू नॉट नीड टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ स्कीम्स, क्या स्कीम्स हैं, बैंकिंग में क्या चल रहा है. ये जो इफ यू चेक ऑनलाइन, पीपल कीप looking at the PDFs, the modules that are available online, created by UPSC, SSC and banking exam portals. You need not go through the details of those. They are very detailed, and उतना current affairs इस exam के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. Then moving on to English. Synonyms, antonyms, आपका vocabulary, reading comprehension, fill in the blanks, spellings, paraphrasing, parts of speech, idioms and phrases. All these you need to do for English. Then लॉजिकल रीजनिंग, जो एनालिटिकल एबिलिटीज की बात हो रही थी, यहाँ पर सिलोजिज्म आपको करते हैं, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, सीक्वेंस सीरीज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिटिंग, ऑड वन आउट, पजल्स एंड वेन डायग्राम्स एंड स्टेटमेंट इन्फ्रेंसेस वाले जो क्वेश्चंस हैं, दीज यू नीड टू डू. देन कमिंग ऑन टू द लास्ट बिट ऑफ इट, मैथ्स, जो हमको बहुत एलिमेंट्री लेवल का करना है. उसमें हम क्या टॉपिक्स कर सकते हैं, नंबर सिस्टम, रेशियो, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम वर्क, लीनियर इक्वेशंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेजेस. तो ये टॉपिक्स आप मैथ्स के लिए कवर कर सकते हैं. नाउ इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन प्रॉब्ली सॉल्व द पास्ट ईयर पेपर्स, और you can solve the questions that are given in your self guide books. Those are enough, because as it is, as I said, कि मैथ्स स्पेसिफाइड नहीं है सिलेबस में,
तो इतना ज़्यादा आपको मैथ्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो 4 एरियाज़ हैं आप उन पे कॉन्संट्रेट कीजिए। As I mentioned, certain links of certain videos are already attached as cards. Go watch those videos, look at the playlist section on this channel wherein you'll find different videos on a revision series, your most important events that have happened, important questions, criminal offenses, as I said, and legal current affairs. So you will find all this in the playlist section. Look at the PDF that has been attached in the description below. And in case you have any further doubts or queries and you still feel कि आपकी कोई query address नहीं हुई है, you can mention the same in the comment box below or reach out to me through various social media platforms that I'm available on. The links of everything are given in the description, and also do follow us on Instagram. We keep uploading new and variety of things that are important and that can supplement your preparation, so you can access that through following us on Instagram. Our Instagram handle is Law Digest by Ayushi. इस हैंडल पे जाके आप हमको फॉलो कर सकते हो. आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू इन अटेनिंग क्लैरिटी एज टू व्हाट इज द सिलेबस, and if it did, then do hit the like button.